हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10 मोर क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? सो सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन 28 जनवरी, दैट इज 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमें रिपब्लिक घोषित हुआ और 2 दिन बाद एग्जिस्टेंस में आया कौन? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, अंडर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट केम बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जजेस क्या होता है? एडहॉक जजेस होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज का कोरम पूरा नहीं हो रहा, जैसे मिनिमम 3 जजेस होने चाहिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस की सुनवाई के लिए, मिनिमम 5 होने चाहिए। इसी तरह किसी और केस की सुनवाई के लिए 3 जजेस मिनिमम होने चाहिए। अगर वो कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को ले सकता है। तो इन दैट केस एडहॉक जज जो होंगे वो हाई कोर्ट के जज की तरह भी रोल करेंगे, और जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रोल करेंगे तो उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट के पूरे पावर्स अवेलेबल होंगे। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। there is no quorum of judges available to hold, then in that case they can appoint ad hoc judge. So next question is the power of the Supreme Court of India to decide dispute between center and state falls under its which kind of jurisdiction? एडवाइजरी जुरिडिक्शन यू विल रीड इन आर्टिकल 143। जैसे प्रेसिडेंट क्या है, वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अपलेंट जुरिडिक्शन क्या होता है? जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे इंडियन जुडिशियरी है एक हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, तो अपलेंट जुरिडिक्शन उसको बोलते हैं। ओरिजिनल होता है कि ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट का ही पावर ओरिजिनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है वो जुरिडिक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन आर्टिकल 131 इट इज़ गिवन दैट सेंटर और स्टेट और 2 स्टेट्स अगर डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इट इज़ अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन दैट केस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट केस इंडिया सावने केस, इंदिरा सावने केस। इट इज़ अबाउट क्रीमी लेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। एक्चुअली अदर बैकवर्ड क्लास में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें आया, क्योंकि बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग थे जिनके पास मतलब वो क्या जनरल से भी बेहतर थे, तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए एक लॉ आया, उसके अगेंस्ट में केस हुआ था। तो दिस केस रिलेट टू क्रीमी लेयर ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। विशाखा केस इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। इसमें इसके अनुसार एक विशाखा गाइडलाइंस भी आई, जिसमें ओनली फिजिकल टच को ही मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं माना जाएगा। इस तरह का बिहेवियर, और अगर कोई एडवांसेज है, कोई किस तरह का फेवर मांगते हैं, मतलब दैट का इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट। तो उसने बहुत ही ज़बरदस्त केस है विशाखा केस। सो नेक्स्ट केस इज मेनका गांधी केस। इन दैट केस व्हाट हैपन, मेनका गांधी वाज told to sub told to submit her passport, and she was not allowed to travel abroad, so she filed case. And in that case Supreme Court told that this is the right to travel abroad is a part of right to live, article 21. So all these 14, 19 and 21, they are not mutually exclusive, it can be practiced at the same time. So option C is also correct. Bela Banerjee case was related to land acquisition act, so option number D is incorrect. So Bela Banerjee case. Next is in India judicial review implies what? Judicial review means if a parliament enact a law or act, then क्या हो सकता है? जुडिशियरी उसका रिव्यू कर सकती है। रिव्यू मीन्स जुडिशियरी कैन प्रोनाउंस अपॉन द constitutional validity of the law and executive order. So option number A is correct one. Next is under which article of Indian Constitution did the president make a reference to the Supreme Court?
to seek the court's opinion and constitutional validity of election commission decision. So court president can the ask the reference from Supreme Court. It is given in Article 143 and it will not be binding on the president. This is only just advisory, not binding on the president. So next question is, consider the following statement. Justice V.R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India. Wrong. He was never been the Chief Justice of India. Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitor of PIL in Indian judicial system. Yes. So only option 2 is correct. One more thing. The father of PIL, you know who is? Justice Bhagwati. He is called the father of the PIL, public interest litigation. Next question. Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? So here it is asking original jurisdiction of Supreme Court क्या है? A dispute between Government of India and one or more state. Yes. If there is dispute between Government of India and one or more state, then it is original jurisdiction. A dispute regarding election to either house of the Parliament. No. A dispute between the Government of India and Union Territory. No. A dispute between two or more states. Yes. So option number 1 and 4. So C is the correct option. Next question. Which of the following articles of the Constitution of India have been declared by Supreme Court as the inviolable basic structure of Constitution? Article 32. Yes. आर्टिकल 32 क्या है? इसमें है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रिट इशू कर सकता है. तो इन दैट केस 32 cannot be modified or cannot be amended. So Article 226 is writ jurisdiction of High Court. That cannot be amended. Article 227 is talks about High Court jurisdiction. So it cannot be amended. Article 245, this can be amended. This is Parliament can make law for the whole part of the territory. State can make laws for their territory. So it can be amended. So option number A is correct one. 1, 2 and 3 cannot be amended. So thank you for the watching my video. Thank you.